You are not audible, Ms. Sambo. We cannot hear you. All right. Good afternoon, everyone, and welcome to our today's session. We will be talking about the role of technology in transforming education in Pakistan today. So, first of all, I'd like to welcome all of my panelists here. Thank you very much for all of you to join us. We've got Najat Abbas. He is the founder of Learning Pitch related to EdTech. We've got Sayed Mehdi Raza Sahab. He is looking after Softcom and director of projects at Softcom, which is a tech-based organization. We've got Mustafa Ramzan Saab. He's has a marketing background, a lot of experience, and Dairyland is the organization. We've got Barrister Sahar, and as the name notes, she's from the law background, so a lawyer by profession. And we've got Ms. Amara Aftab, who is the CEO at The Brains, and a well-being organization from the psychology sector as well. So thank you very much, all of you. It's lovely to have you here today. So I will start off with setting the scene about. So sorry, my name is Sumbul Mansoor. I'll give my introduction as well. So I'm an academic, and I've been working in higher and further education in Pakistan and in the UK. And currently, for the last few years, especially post-pandemic, looking at edtech revolution and how edtech can support teaching and learning in academia, and how do we train our teachers. So that's been my forte for the last few years. So coming to the actual topic of discussion today, the role of technology and how important it is for the Pakistani education system to be able to adapt and adopt different policies and structures and create those facilities for our learners. So that is something that we'll be talking about today. I'll start off with actually somebody who has a tech-based background. So Mehdi Saab, coming over to you in terms of looking at a technology organization and an emerging tech scenario in Pakistan. How do you see that connecting with academia and education? Thank you, Symbol, for the brief introduction. And as you stated, the right linkage between the academia and the current learning environment in Pakistan, alongside with the professional and the career opportunities. So to start off with, I just give you a brief background of our organization and how do we contribute to it, and then I'll just brief you what's my perspectives against all this. So to start off, it's more of that we are a HR solution provider company, and through that we also provide some training solutions and design training programs for organization for professional education. So for our linkage towards the academia side, it's more towards that we try to collaborate with many academic universities to provide some courses in details of academia pre-hand experiences of how the technology is currently being implemented, used by different organizations. So that's where we link up, like introducing some courses for HR tech, or maybe some courses for how the chemistries work in the quality side and how to digitalize those areas. So that's how we connect with different universities like IBA, Zabist, and those universities. So going along side, we provide training and training program designs to professional organizations as well. So having experience alongside working with professional organizations like MNCs, large organizations here, we learned a lot from them that training is one thing. Education never goes like it's a never ending or a never stopping field. It should go alongside your professional overall goal. And how we have evolved over a period of time, that through technology it's end times, because the generations are keeping on changing. Like I believe that the newer generation are more into game based learning. So the game based learning mechanism, and they are more on experiential side. They don't want to go with the theory now. Now it was a thing like 10 years back, people used to go with case studies and revamp those case studies. Now people want learning in a pack, in a box, like a video maybe. So a person, majority of the population can watch the video and understand. So that's where the technology comes in.
That's where the game based learning comes in. So that's what we are trying to work with as well, and we try to comprehend that as well. So just last thing for my side, that what I perceive about the linkage right now is that okay, I just cover it in a very smart short story that 10 years back I went for an international exposure for an experience for a professional work. So there I was working with university students, and they were doing something very amazing, that was junior enterprise concept. So the university students in itself were trying to make products and their own they were making their own organization to sell it to the B2C market. So it was a actual experiential learning concept. So that's where I learned that in our academia, that needs to be implemented to the full flesh, in terms that junior enterprises needs to be created, whether they should sell services, whether they should sell products, but while actually working on something and getting a actual return of money out of it, which is reimbursed into their education. That's how you actually want to realize, or you want to you will get hold of what's going around in this time, and that's how you're going to improve, which is being majorly being done by many social organizations. I really applaud their efforts. And there are many organizations like JDC, like Akuat. Now they are working towards more empowering youth with new IT skill sets. So which is very important. This is the era of skill set, not just just degrees and everything. With skill sets you can do wonders right now, because freelance is available. You can earn, you can go milestones, you can do wonders. So that's my take on overall. I believe I just kept it short. So yes. Absolutely. Thank you very much, Insab. I was very on point, and a lot of areas that are very relevant to what we'll be discussing moving forward as well. आपकी मैं आखिरी बात से थोड़ा सा I'll build up on that skill set. That's what you said, and I'll relate to that because the organization that I'm part of at the moment in Pakistan, we are the International Center of Excellence. हमने सेटअप ही यही किया था कि हम academic degrees को how can we actually scaffold some skill building development to that. So the whole organization that I'm working with is focused on that, because as you see in different countries outside of the UK, because as I said, I've have some international experience and UK experience, so there's a lot of focus on building skills as well, and that comes through on hands-on trainings as well. So that is something that we must now be looking at for the Pakistani youth as well. So we work actively to develop that. And I'm going to now come back to the other points that you made in the beginning, which are very important. Game design, and there's a word now, edutainment. So there's education and entertainment clubbed together. So edutainment is something that is also becoming very, very important. And it's all going to rely on the tech-based uh, features and operations and facilities and applications that learners can have access to. So I'm going to route that question actually, which is up to you. Learning Pitch is a startup. It's an edtech startup. So I think you're in the middle of that scenario where you're actually working on all of these lines. So tell us a little bit about the edtech sector and how your advent has been in this scenario, and how do you feel things are consolidating towards us able to provide those opportunities to youths? ठीक है, thank you, Sumbal. And a quick introduction. Basically, I am a technology background person having around 22 years of experience in Pakistan, Middle East, and East African region. Prior starting Learning Pitch, I was with Microsoft Pakistan in 2017. So I started Learning Pitch in 2017. अब तो 5 साल हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस भी हो गया है, और थोड़ा सा समझ में भी आया कि मार्केट किस तरह है एजुकेशन की. तो मैं ये समझता हूँ कि व्हाट मेहदी हैज सेड जस्ट रिसेंटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड two things which I think there is a huge misconception around. When we said that कि पाकिस्तान में एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी कैसे करेगी, so we need to first understand the landscape of education in Pakistan. So the landscape of education in Pakistan is very broken, unfortunately. So पाकिस्तान जो एजुकेशन का बजट स्पेंड करता है दुनिया में, वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है. पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दुनिया में सबसे लोएस्ट कैटेगरी की आती है.
पाकिस्तान में दुनिया के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नाइजीरिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्रोकन सिस्टम है। तो जो सिस्टम बना हुआ ना हो, उस सिस्टम को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने जब देखा कि टेक्नोलॉजी पोस्ट कोविड, जब टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई, अच्छा मज़े की बात ये कि टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी पाकिस्तान में इतना ब्रोकन है कि हम इस वक्त अगर 6 लोग इस वक्त एक कॉल पे हैं, सो वी डोंट नो कि किस टाइम किसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, किसकी लाइट चली जाएगी, क्या होगा। तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जिस चीज़ को आप चेंज करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी ब्रोकन है। तो we have not seen success of edtech companies, unfortunately, in Pakistan the way which we have seen in our neighboring countries. So when we started working on some of the education technology setups, we were surprised to see more comments coming from the neighboring countries than from our students जिनके लिए हमने कंटेंट बनाया था। तो हमने देखा ज़्यादातर हमें मैसेजेस वहाँ से आते थे, ज़्यादातर हमें यूट्यूब पे कमेंट्स वहाँ से आते थे। सो वी वर रियली सरप्राइज्ड के व्हाई दिस इज हैपनिंग अराउंड अस। तो फिर समझ में आया कि जाहिर सी बात है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द स्टेट ऑफ एजुकेशन इज ब्रोकन। दैट्स व्हाई यू कांट ट्रांसफॉर्म द सिस्टम विच रिक्वायर्स मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, रादर ट्रांसफॉर्मिंग। तो पाकिस्तान में from last 70 years what we are good at, we are providing at least low level human resource कि जहाँ पे हम छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन क्वालिटी का, ह्यूमन कैपिटल का हमारे पास ज़्यादा यूथ है जो छोटे छोटे काम कर सकती है। वो छोटे छोटे काम क्या कर सकती है? वो ये कर सकती है कि वो लोगो डिज़ाइन कर ले, वो कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर ले। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो पिछले 5 साल में what we have seen the popularity and at least success to these things in Pakistan, which is now termed as skill based education, कि जहाँ पे हम देखते हैं there is a huge force of trainers, influencers, students popping up in Pakistan कि जो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्स करते हैं और वो उससे एटलीस्ट थोड़ा सा अर्न कर पाते हैं। So at least this is something positive that the technology has created an equalizer to someone sitting in a very remote area in Pakistan, and he or she is able to earn some dollar because of that training which they have received online. So I think this is at least a light at the end of tunnel, कि हमें कुछ नजर आता है कि there is some hope that what we can do. So I think with this realization, at least at least we should able to know कि हमें काम किस जगह करना है। ऐसा ना हो कि हम एक ऐसी जगह काम कर रहे हो कि जहाँ पे हम देखें कि बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप आए और उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, और हमने देखा कि पिछले 1 साल में आई हैव सीन क्लोजर ऑफ लॉट्स ऑफ एडटेक स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान। I have not seen any success among the edtech startup in Pakistan, and there is a very huge reason to that, because the market is not that, because the system is broken. So at least वो जो एक पहली समझ है वो ये समझना चाहिए कि भाई हमें मेहनत किस जगह करनी है, कौन सी मार्केट पे मेहनत करनी है। So at least true realization which I have at least got, के पहली realization ये है कि इस startup for Pakistan, for Pakistani people is a bit very challenging. So that is one thing. The second thing is, so if a startup is challenging, if product innovation is challenging, then what to do? Then maybe we are good at services business, कि हम at least services provide करना शुरू कर दें। Innovation, startup is something जो कि हमसे थोड़ा सा बड़े लेवल का गेम है, at least for majority of Pakistan. The first realization is this. The second realization is this, that the segment of education is a very challenging one. And if you talk about higher education, if you talk about conventional education,
the system is not that at a mature level. So what we can do, we can start at a different level where might be some kind of short courses, some kind of skill based courses. These kind of programs would help to the majority and masses in Pakistan. So this is my feedback to, I hope I could able to answer your question. जी एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच, बट आई एम गोइंग टू हैव अनदर क्वेश्चन। आप जो बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली एग्री विद ऑल द पॉइंट्स एंड आई एंडोर्स दैट के हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो तो ऑफ कोर्स दे स्टार्ट ऑफ विद इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने बात की, द फैसिलिटीज एंड द एबिलिटी टू एक्चुअली हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फर्स्ट, उसके बाद उसको हम ट्रांसफॉर्म करने की बात कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू, आई एम श्योर एज नॉट जस्ट एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, इवन एज पेरेंट्स और इवन एज फैमिली मेंबर्स, इंडिविजुअल्स, पर्सनल लेवल पे भी मेरा ख्याल तो ये है कि आई थिंक कि पैंडेमिक की सिल्वर लाइनिंग पाकिस्तान एजुकेशन के लिए ये थी कि वी गॉट अ स्प्रिंग बोर्ड, ज़बरदस्ती एक ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस लर्निंग टीचिंग, वर्चुअल क्लासरूम्स की तरफ ऑटोमेटिकली एक जो है ना वो कहते हैं वी गॉट अ पुश। और उसके बाद से आई थिंक अ लॉट ऑफ एडटेक टूल्स की फेमिलियरिटी, आई माई सेल्फ हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज टीचर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि किसी के पास ये आइडिया ही नहीं था ना, इतना सडन एक वो ऑनसेट था कि आप शिफ्ट कर जाएं फ्रॉम अ फिजिकल क्लासरूम टू अ वर्चुअल क्लासरूम, एंड अ वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कोर्स रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एंड देन द एबिलिटी टू यूज दैट टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हम फिर रूट कॉज की तरफ आते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन में तो पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे मेरी साहब कह रहे थे कि आपने पहले तो लोगों को इक्विप करना है ना। So let's talk about generating that sort of a solution कि हम training skills से start करें। Teacher training is what we want to look at, but at the same time, of course, there has to be public-private collaboration in terms of having those facilities available to the wider mass. आप out of school children की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा problem है पाकिस्तान का, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या हम एडटेक को लेवरेज करके उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकते हैं किसी तरह से? क्योंकि अब आप देखें आउट ऑफ स्कूल का नंबर बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल एक्सेस का नंबर कंसिडरेबली बाकी कंट्रीज से जो इस तरह की इकोनॉमीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। हमारे पास हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके पास स्मार्टफोन एक्सेस जो है वो कंसिडरेबली ज़्यादा है as compared to other countries who have similar sort of economies and similar sort of GDPs. So उसको leverage हम किस तरह कर सकते हैं? I think I've lost one person. मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो he's not here. So I'm leaving the question open. Anybody who would like to comment on this कि हम leverage किस तरह कर सकते हैं अपनी existing capacity को पाकिस्तान में? अच्छा, इसमें देखें आपने जो बात की ना वो ये कि आपने बात की कि मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन रेशो पाकिस्तान की ज़्यादा है। ये भी हमें देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नंबर्स के हिसाब से वी आर नॉट गुड एट दैट पार्ट, आई थिंक सो, व्हाट द नंबर्स आई हैव सीन। बहरहाल चलें, जितना भी है तो हम देखते हैं कि उसका यूज़ क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जंग ने इसको सर्वे किया तो ये बताया कि 73 और मोर देन 73% of the time of employees are spent on Facebook. ठीक है, more than 73% of the times of mobile जिसके अंदर लोगों का टाइम जो है वो फेसबुक पे इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ अवेयरनेस या सिर्फ अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलता, मतलब थिंकिंग से, माइंडसेट से, बहुत सारी चीज़ों के बाद ये चीज़ें आती हैं। तो यस, द टूल इज़ अवेलेबल टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे से पूछें जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहा है, ग्रेड 6 में है, ग्रेड 7 में है, कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चा आपको ये कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाऊँ और मैं उससे अर्न करूँ। तो ये इस वक्त हर स्कूल का बच्चा आपको ये बात करता नजर आएगा। आप किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे से मिलें, आप कहें कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो कहेगा मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। तो हमें ये देखना चाहिए कि एज ए नेशनल हमारी प्रायोरिटी क्या है। नेशनल प्रायोरिटी ये है कि बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली वीक, तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि एटलीस्ट वी आर एबल टू अर्न समथिंग, एंड वी हैव सीन के चलो कम से कम
मैं अगर लोगो डिज़ाइन कर लूँगा तो मुझे ये मैं थोड़ा-सा कमा लूँगा। तो एटलीस्ट हमें हमारा लेवल 1 मेरे ख़्याल से यही है। लेवल 5 ये हो सकता है कि हम इनोवेशन पे जाएँ, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाएँ, हम हायर एजुकेशन की बात करें, हम कोई चीज़ों की बात करें। लेकिन मेरे ख़्याल से सिर्फ़ मोबाइल के होने से मसला वो हल नहीं होगा। मेरे ख़्याल से ये लेवल बाय लेवल है कि जैसे वो मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ नीड है, कि जब तक आपकी जी फिजियोलॉजिकल नीड एड्रेस नहीं होगी, तो जो आखिरी नीड है कि जहाँ पे आप सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन पे जाते हैं, तो आपकी लेवल ऑफ नीड्स हैं। तो मेरे ख्याल बिल्कुल से सही। अगर हम अगर हम ये देख लें कि हमारी लेवल ऑफ नीड कहाँ एस्टेब्लिश करती है, उस लेवल ऑफ नीड को एड्रेस करना शुरू कर दें और वो फुलफिल होगी तो शायद हम अगली लेवल ऑफ नीड पे चले जाएंगे। तो मुझे मेरा ये थोड़ा सा फील है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं इसमें बस वजाहत भाई की बात को एक दो पॉइंट्स और ऐड करूंगा। जैसे हमें वजाहत भाई ने बहुत राइटली आइडेंटिफाई किया कि हमें नीड के साथ ग्रो करना है। उसमें पहली चीज़ भी एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि मोबाइल की यूसेज है, अग्रीड मोबाइल की यूसेज है, उससे मतलब अनइंटेंशनल लर्निंग हो रही है, देयर इज अ पॉइंट, बट आर वी are we there yet for intentional learning that will drive change? Intentional learning is getting enrolled on a course, getting enrolled for an online free course which is readily available throughout the world। वो मैं उसमें एनरोल कर रहा हूँ, मेरा एटीट्यूड, मेरी एपिटाइट बनानी होगी। हम एज अ मास लेवल हमें वो एपिटाइट बनानी होगी, हमें कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी कि हाउ द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ, बिकॉज हमारे यहाँ मसला ये है कि थ्योरी 5-6 क्लास में अच्छे स्कूलों, टॉप टियर यूनिवर्सिटी स्कूल्स में तो फिर भी कुछ करा रहे होंगे, बट लोअर टियर स्कूल्स के अंदर तो अभी वो ड्राइव भी नहीं है। अभी तो पुरानी किताबों और उन्हीं की सहारा लेके सारी चीजें चल रही हैं, अगर चल रही हैं तो स्कूल में तो है भी नहीं। अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो उनको डायरेक्शंस तो कम से कम सेट करने पड़ेंगे हमें, किस एज अ होल बॉडी कैंपेन रन करके कुछ डायरेक्शंस तो सेट करेंगे। So that is just one point I would like to add with Vajat bhai. So somebody needs to set the direction that where we want to go. So that's it. बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक वो आई विल गो a little bit further and say वो somebody हम collectively ही बन सकते हैं। We are all part of that somebody, I think, and we need to start pitching in जो हमारा वो जैसे कहते हैं ना कि अपने हिस्से का दिया। So I think we're all doing our part. We're even just having a conversation about it कि हम ये बात कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और कुछ एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जा सकते हैं और किस तरह कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं विद फर्दर कोलैबोरेशंस। 21st सेंचुरी जो है वो आपको यही 3-4 चीज़ों पे बेस कर रही है। स्किल्स के आपने कोलैबोरेट करना है, आपने कम्युनिकेट करना है, क्रिटिकली एनालाइज करके सॉल्यूशंस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। हमारा आई कम टू यू फॉर दिस, थोड़ा सा आपका अब फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट कि लोगों की अडेप्टेबिलिटी किस तरह से हो सकती है और किस तरह हम उनको चैनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रही थी। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। कि मेहदी साहब ने जिस तरह बात की, वजाहत साहब ने जिस तरह बात की कि हमें ये पॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, बट इन दोनों के पॉइंट्स से पहले मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज द ह्यूमन माइंडसेट। ठीक है, आपका अपना माइंडसेट क्या है? जब तक आप अपना माइंडसेट को नहीं क्लियर करेंगे, ठीक है, तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ भी करने से पहले एक इंडिविजुअल का माइंड कैसा है, ठीक है, उसके किस तरह के थॉट्स हैं, वो पॉजिटिव चीजों को देख सकता है या नहीं देख सकता। बिकॉज बीइंग एन एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर, यानी कि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली आई एम इंटरनेशनल ट्रेनर, तो मेरी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है उसमें बेसिकली हमें बताया ही जाता है कि आपका अपना माइंड, बेसिकली उसके कॉन्शियस माइंड के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट इंडिविजुअली हर एक बंदा क्या सोच रखता है और किस तरह से उसकी सोच को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से वजाहत साहब ने काफी सारी बातें बोली कि जिसमें काफी ज्यादा हमारी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से या स्कूल के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं हो रही है। जिस तरह से अगर हम अपना पीपीसी का लाइक हमारे जो पाकिस्तान का लॉ है उसके काफी 25A जो आर्टिकल है उसमें जिस तरह से मेंशन हुआ है कि इतने बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लाइक स्कूल में जाने चाहिए और जो नहीं जा रहे हैं, तो हर चीज से पहले पॉइंट ये बनता है हमारे पास कि आपका अपना माइंडसेट क्या है एक इंडिविजुअल का, आप किस तरह का माइंडसेट लेके चल रहे हैं और फिर उसको किस तरह फुलफिल किया जा सकता है। तो बेसिक चीज तो ये है कि इंडिविजुअल
बेसिकली हर किसी का माइंडसेट को ना वो पहले तो ट्रेन किया जाए, ठीक है। बाकी चीजें तो हमारे पास सेकेंडरी होती हैं, क्योंकि अगर हम जिस तरह से कुछ इस तरह की बातें जी कि जी पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, तो उससे पहले भी एक हमारे पास एक थ्योरी होती है, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड फोबिया बेसिकली, ठीक है। बिकॉज देखें, हर्डल्स तो हैं, चैलेंजेस तो हैं, बट क्या करें, वी हैव टू मूव ऑन ना। तो फॉर दैट पर्पज हम जब तक पॉजिटिवली चीजों को देखेंगे नहीं, उनको अज्यूम करेंगे नहीं, विजुअलाइज करेंगे नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ चैलेंजेस को ही अपने पास नोट डाउन करके रखें कि ये चैलेंजेस हैं, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, ओके। तो दिस इज द मेजर पॉइंट इज दैट कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है। तो ट्राई टू डू वट एवर यू कैन डू इट बेसिकली। तो द मेजर पॉइंट इज यही है कि आप एटलीस्ट इनिशियली किस तरह की चीजों को ठीक कर सकते हैं, उसकी तरफ जाएं, उसकी लर्निंग करें। जो नहीं, अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं, ठीक है, मोबाइल की बात है जी, हमारे पास इतने लोग हैं मोबाइल, अगर हम उनका माइंड सेट इस तरह से ट्रेन कर दें, ठीक है, ये स्टूडेंट्स का ट्रेन करेंगे जी, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो फेसबुक पे इस तरह से जो है वो आप मार्केटिंग के एड्स लगा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली क्लासेस होती हैं ऑल। तो फेसबुक के क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं अगर उनको बताया जाए, तो क्या हमारे यही बच्चे जो है वो लिंक्डइन के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है या वीचेट के थ्रू, क्या इनको यूके में, यूएस में, क्या इनको ऑनलाइन जो है वो जॉब नहीं ऑफर हो सकती, रिमोट जॉब नहीं ऑफर हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप सिर्फ लिंक्डइन यूज कर रहे हैं कि किसी की पोस्ट देखने के लिए, आप लिंक्डइन की लर्निंग यूज कर लें। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप ये देख लें कि किसी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इंस्टाग्राम पे लोग किस तरह से चीजें पोस्ट कर रहे हैं, और कौन से लोग किस तरह के लोगों की किस तरह की पोस्ट के ऊपर किस तरह के लाइक्स आ रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि एक इंडिविजुअल का माइंडसेट कैसा है, वो कैसे सोचता है। या अगर उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे आप और मैं बैठ के सोच रहे हैं इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन लेके, तो क्या हम उन लोगों की ट्रेनिंग नहीं कर सकते? क्या हम उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपका माइंड ट्रांसफॉर्म होगा तो फिर एक्सेप्टेंस आएगी, जब एक्सेप्टेंस आएगी तो फिर आप किसी भी चीज को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जी मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है, बट आप ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि या आई कैन डू इट, आई कैन लर्न इट। तो लर्निंग का तो डोर आपको पता है हमेशा के लिए ओपन रहता है। तो इससे क्योंकि बेसिकली आई एम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, तो मेरा लाइक सीपैक के प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस भी रहा है। अगर क्वालिफिकेशन वाइज बात करें तो आई एम स्टैटिस्टिशियन टू, तो आई एम द फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर जिसने सीपैक के प्रोजेक्ट्स में काम किया है, एंड देयर इज अ लॉट, एंड स्टिल आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ, दो आई एम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। But the point is कि if there is a will, there is a way. So you should know what exactly you want और आप क्या चाहते हैं। Once you know what you want, तो फिर आप उसको ग्रेजुअली जो है वो चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड, योर ब्रेन भी सके। Absolutely, हमारा just a very second. valid point. जी 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 go on. सॉरी हमारा दैट्स अ वेरी अगेन अ वेरी राइट माइंडसेट। इसमें बस मैं वही चीज के दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, बिकॉज सी the will of our people, it needs to be directed. It takes time like at least 3 years to 3 to 5 years to transform people's mindset in terms of education drive. You can see your fellow country like India, like Iran के पास तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी, they need to go about it. There was an embargo all over the worldwide, so everybody उन्होंने enforce learning कराई, हर आदमी को पढ़ाना भी जरूरी था, पढ़ना भी जरूरी था, इस तरह से ड्राइव कराई। लाइकवाइज इन इंडिया जब एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हुई, दे रन अ बिगर कैंपेन्स। लाइकवाइज द केस पंजाब में हुआ था, पढ़ा लिखा पंजाब स्लोगन जो था, इट रियली ट्रांसफॉर्म्ड, इट पेनिट्रेटेड डीप। सो इट्स द डायरेक्शन दैट यू नीड टू सेट। सो यस, Perfect. I think और इसमें एक absolutely बात याद करो, तो information. हमारे जो बेसिकली जो कोर लीडर्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, इफ समवन इज इन लाइक एचआरजीएम, सो ही शुड लर्न कि किस तरह से उनके स्टाफ को, उनके जो अदर कोलीग्स हैं, उनके माइंडसेट को कैसे जो है वो रीसेट करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अनलर्न एंड देन रीलर्न। जब तक अनलर्न नहीं होगा तो रीलर्न नहीं हो सकती चीज। यस मिस, हो ठीक है।
Perfect, Amara. Thank you so much. Very valid points. बहुत सारी ऐसी आपने you've actually touched on the pearls के thought transformation की आपने जो बात की, those are the key words. मेरी तो सारी बात में I think I would think कि that is probably the first building block जहाँ से हम चीज़ें आगे शुरू करेंगे. And as Mehdi said कि direction वहाँ से. And this all again comes back कि हम सिर्फ पॉलिसी मेकर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हर लेवल पे। एंड मैं फिर वहीं बात करूंगी कि एज एकेडमिक्स, एज पीपल इन वर्किंग इन एजुकेशन, सबसे बड़ा रोल तो हमारा है कि हम एक टीचर को पहले एक माइंडसेट चेंज कर रहे हैं तो आपने ऑटोमेटिकली शायद 200 लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज वेयर टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डअप करना और टीचर्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर थॉट इज प्रोबेबली द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक एट। बिकॉज आज अगर हम भी इस वक्त 5-6 लोग यहाँ पे हैं, एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू वाउच कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या हमारे ट्यूटर्स ने या हमारे मेंटर्स ने किस तरह से हमें डायरेक्शन दी है। So I think that is something that we need to look at as well. Mustafa साहब, I'm going to come to you. आप बताइएगा, हमारा बात कर रही थी about the corporate sector प्लेइंग दिस रोल के वहाँ पे भी कंपनीज में अगर हम माइंड सेट चेंज करने की बात करते हैं। और एक और बात मैं भी आप वाइल यू वर टॉकिंग तो मैं बात देख रही थी कि पिछले कुछ महीनों में थोड़ी सी इंटरेक्शन मेरी हुई विद मिनिस्ट्री IT, तो डिजी स्किल्स का प्रोग्राम पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च हुआ था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और उसके भी मुझे सक्सेस स्टोरीज, बहुत कोई टैंजिबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है तो आप डिजी स्किल्स के थ्रू काम करना सीख सकते हैं। सो आई थिंक उस तरह के इनिशिएटिव्स, डू यू थिंक कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हैं वो उनका फिर आगे इम्पैक्ट होता है? लोग आपके पास इस तरह के प्लेटफॉर्म से, या जैसे ये कामयाब जवान का प्रोग्राम है जिसमें स्किल्स बेस्ड और टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी गई, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं उसमें, वो लोग फिर मेन स्ट्रीम जॉब्स में आने की उनकी कैपेसिटी बन जाती है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? Thank you, Sumbul. Thank you for having me. I'm thrilled to be in the company of educationists and edtech experts. My background is predominantly marketing and digital product management, and within digital, more specifically, fintech. So from 2010 till 17, I was actively working with mobile money players, and I can relate to some of the frustration that Vajahat referred to in terms of growth hacking the market, enjoying a level playing field with the incumbents, etc. Acha, before I come to the specific question, corporate sector, how do they view edtech? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि corporate sector in one form or the other have always used technology. As far back as 2004-5 with my first employer, Pakistan Tobacco, we were given a CD जिसके अंदर की एक global training program loaded था. We would log in, continue with our training, and it will track our progress. So corporate sector is the easier part, but actually I want to, from marketing, revenue assurance, and business modeling perspective, I want to talk about how do we develop this market given the kind of constraints we are, faced with. सबसे जो बड़ा चैलेंज है ना इस मुल्क में वो बिजनेस मॉडल का है, जो आई वुड से जो माफिया इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, they are not open to technology. Secondly, they do not view it as an opportunity to make more money. They view it as additional cost. So उनके यहाँ कस्टमर एक्सपीरियंस को बूस्ट करना, लर्निंग को इम्प्रूव करना मुझे नहीं नजर आ रहा. ठीक है, मैं खुद भी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक ये है कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है. सो आई टीच पार्ट टाइम वंस इन अ व्हाइल एट यूनिवर्सिटी लेवल. तो वजाहत जैसे enthusiast and passionate entrepreneurs को मेरी एक हम्बल एडवाइस ये होगी कि आप बिल्कुल ही
आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिव तरीके से मार्केट क्रिएट करें। और उस मार्केट को क्रिएट करने के लिए आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर इनटू एडटेक, उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, B2B कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं। टेक क्रंच इज वन सच प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर हाउस आउट ऑफ लाहौर। उनका प्लेटफॉर्म लर्निंगो के नाम से किप्स में चल रहा है पिछले 10 साल से। और Zubair is a good friend, so he continues to benchmark himself against Byju's। Byju's की देखो इतनी वैल्यूएशन हो गई है, मेरी प्रोडक्ट में इतने फीचर्स हैं। But it's not been an easy ride for the edtech entrepreneurs to raise money in this market. So जो अनकन्वेंशनल तरीके से इस मार्केट को ग्रोथ हैक करना होगा, उसमें आई बिलीव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टेस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, वहां पे जो है ना ब्रिक एंड मॉर्टर है, लेकिन दे कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है, आई थिंक टेस्टिंग इज वन। सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट, जो जनरली हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसर्स के लिए या फॉर एनी प्रोफेशनल। डॉक्टर्स के लिए फर्दर स्किल डेवलपमेंट क्या हो सकती है, इंजीनियर्स के लिए क्या हो सकती है, आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकती है। So one needs to think out of the box. फिर I think partnership and alliances with NGOs, with donors, ऐसे पायलट प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि जिससे कि प्राइवेट सेक्टर एक्साइट हो कि हाँ भाई, if we get into this segment with EdTech, it's a better business model. तो आप कन्वेंशनल माफिया को जगाएं कि भाई अब आप EdTech में भी आ जाएं। सो एक तो ये कि आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स। पर्सनली कपल ऑफ एरियाज विच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दुनिया के अंदर मेंटल वेलनेस जो है ना, इट्स अ मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर हमें ये नहीं पता कि हाउ टू पेरेंट। मतलब मैं हैव 3 चिल्ड्रन, मैं आई स्ट्रगल विद सर्टेन एरियाज कि मैंने पेरेंट कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है पेरेंटिंग की। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, इस पर कोई ट्रेनिंग नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। बिलीव यू मी, आई नो HR हेड ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, शी सेड मुस्तफा, लोग आते हैं मुझे लाखों रुपया देते हैं रिलेशनशिप कंसल्टेंसी का, और एंड में प्रॉब्लम क्या होता है, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मैं सिर्फ उनकी बात करा देती हूँ, कम्युनिकेशन। तो कहने का मकसद ये कि पेरेंटिंग हो गया, मेंटल वेलनेस हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। लोगों को CV बना के इंटरव्यू कर देना नहीं आता इस मुल्क में। बनाया 5,000 रुपए का प्रोग्राम, लाखों पेरेंटिंग की आप बात कर रहे हैं, सॉरी आपके साथ आई विल जस्ट ऐड दैट पेरेंटिंग स्पेशली इन दिस जनरेशन, बिकॉज आई एम अ पेरेंट एज वेल, जैसे आप बात कर रहे हैं, सो आई हैव चिल्ड्रन एंड आई थिंक जो एक डिजिटल डिवाइड भी आ गया है पेरेंटिंग में, दैट्स आल्सो मेड इट वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। जो डिजिटल नेटिव्स अब बच्चे ग्रो अप कर रहे हैं, उनको पेरेंट करने के लिए कुछ और स्किल्स चाहिए, कुछ और अप्रोच चाहिए, कुछ और क्या कहते हैं माइंडसेट चाहिए। यस एंड नो, बट देखिए फंडामेंटल्स जो है ना, वो विल कम फ्रॉम साइकोलॉजी, कि बच्चे को आपने रिस्पेक्ट देनी है, अटेंशन देनी है, लव देना है, और हर वक्त डांटना डपटना नहीं है। करीब करके आप कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि एक तो आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन अभी तो कुर्बत टेक की ज्यादा है ना, पेरेंट्स की कम है। मसला ये है कि डिवाइसेस एंड टेक की कुर्बत बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, एंड दैट इज वेयर देयर मोटिवेशन इज। दैट इज वेयर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे जो हैं वो यूज कर रहे थे, तो मैंने कहा यार आप ये गेम खेलें, ये नंबर्स वाली गेम खेलें। मैं उनके सामने स्पेलिंग्स वाली गेम खेलना शुरू हो गया। ठीक है, सो माय सन मैं 1000 लेवल पे था, वो 20th लेवल 40th लेवल पे पहुंच गया। उसने कहा देखिए मैंने आपसे सीखी है। तो बच्चों को आप इंस्पायर करें। बॉटम लाइन ये है कि बच्चों को आपने टाइम देना है और अटेंशन देनी है। सो कमिंग जस्ट समिंग इट अप, तो एक तो इस मार्केट को ग्रोथ हैक करने के लिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन में बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स प्रोग्राम्स लेके आए जाए। दूसरा आई थिंक डोनर फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ऐसे पायलट्स किए जाएं कि जिससे पॉलिसी मेकर्स को जगाया जाए। So I think these are my. I think that's a very valid point. जो आप alliances, बाकी I think corporate sector alliances I think is a very valid thing जो हम I think ignore कर रहे हैं अभी।
in Pakistan. I think that third sector alliance is not given that much scope abhi. Ji. And responding to the specific questions you raised in the context of the corporate sector, I think corporate sector के पास अच्छे training budgets होते हैं. They are always welcome to new ideas. But बात वही है कि they don't just need a technology platform. They need much more than that. कि आप ऐसी gamified leadership programs बनाएं, you know, कि corporate sector के लिए वो irresistible हो जाए. So marketing में there is a saying that content is the king. So I think beyond tech अगर आप अपने content को इतना engaging कर लें और ऐसे areas को tech के through आप you know digitize करें जो कि लोगों की need है, जो उनको professional और personal development में they should feel कि they would miss out on something, और उसमें आप donor का पैसा लाके pilots करें, public private partnerships करें, and then scale it up. So it's easier said than done. Obviously, we can't relate to some of the entrepreneurs' journeys who have been in the tech space, but I think directionally, one got to think on these lines. Okay. Thank you very much, Mr. Very valid points, and I think a lot of food for thought के थोड़ा सा out of the box किस तरह से चीजें की जा सकती हैं और किस तरह से facilitate किया जा सकता है, especially for the new ventures into the edtech industry as well. Sahel, sorry, coming to you. So thank you for joining us today and being there. So अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताइएगा in terms of the barriers आपका ख्याल है कि क्या है in our society. We've been part of the legal system. So from the legislation and the regulation point of view से अगर आपके, I would like to hear that perspective. हमने शुरू में बात की, वजाहत raised the fact कि infrastructure and the whole ability to reach out and having access to technology, तो issues तो हैं हमारे. But we are where we are, और उससे आगे हमारे पास जो मजीद डिजिटल डिवाइड में regulations का legislations का क्या रोल है, जिससे हम how do we work with that? Thank you, Sumbul. This is actually a painful topic, and in some ways, each of our panelists touched upon a nerve today. देखिए, आई थिंक अभी सबसे रिसेंटली मुस्तफ़ा साहब ने एक बात की कि हमें पॉलिसी मेकर्स को लॉबी करना चाहिए कि वो इस एरिया में लॉ बनाएं. पाकिस्तान में टेक को आप छोड़े, पाकिस्तान में एक एज अ लॉयर या एनीबडी रिलेटेड टू द लीगल फ्रेटर्निटी, एक चीज़ जो हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं वो ये है कि लॉज बहुत हैं. इतने लॉज हैं कि लॉयर्स को भी, हमें भी नहीं पता कि कितने लॉज हैं, बट लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. जब कभी हमसे कोई सवाल पूछता है, अच्छा दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिक हमारे, बिकॉज आई वर्क विद डोमेस्टिक क्लाइंट्स एंड आई ऑल्सो वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स. डोमेस्टिक क्लाइंट्स का कंसर्न कुछ और होता है, ऑब्वियसली उनको यहाँ ऑन द ग्राउंड चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं. इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनका सबसे पहले सवाल ये होता है कि इस टॉपिक पे पाकिस्तान में लॉज क्या हैं. और जब हम वो लॉज ढूंढने बैठते हैं, एक और डिलेमा या अलमिया ये है कि हमारे पास कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है लॉज का. तो जब हमें लॉज ढूंढना होता है तो हम गूगल पे देख रहे होते हैं या फिर फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, और ना हमें अपडेटेड लॉज मिलते हैं, ना हमें पूरा जो यूनिवर्स ऑफ लॉ है वो मिलता है. बट जब हम ढूंढने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉज तो बहुत है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आई थिंक इस स्टेज पे मोर देन एवर हम सब ये फील करते हैं कि पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और हम उस स्टेज पे थे where we had to, so as a developing country, it was our turn to move on to the next stage. But in the last few years, there has been political instability, which all of us now feel more than ever. Or in fact, a few years ago, so pandemic से पहले भी मैं बात करूँगी, और आज ही हम किसी को एडवाइस कर रहे थे टेक से रिलेटेड. सो we're also, मतलब बाहर के मुल्कों में टेक्नोलॉजी लॉयर्स अलग से होते हैं, हमारे यहाँ इतना सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है. अनफॉर्चुनेटली जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ, उसके बाद से मुल्क के हालात इतने स्मूथ और सीमलेस नहीं रहे हैं. whether it was the transition to a new government, whether it was the pandemic, the floods, or the situation, the economic and political situation we are in now. तो वो इतना अच्छा एक ripe stage था, and because I was in that that legal framework or ecosystem, it was a very exciting time.
लॉज बन रहे थे, पॉलिसीज बन रही थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जब ले जाने का वक्त आया तो फिर मुल्क के हालात वैसे नहीं रहे। और इसका ये मतलब नहीं है कि हालात वैसे हो नहीं सकते, हो सकते हैं, बट मसला ये है कि अब हमारी प्रायोरिटीज और हमारा फोकस, एंड बाय हम आई मीन everybody, I guess, focus थोड़ा सा change हो गया. We all need to, I mean, I can't stress this enough. We all need to just come together. I know it's easier said than done, और अभी तो एक wishful सी बात लगती है. We need to sit on a table. Differences तो हमारे में रहेंगे, differences तो family members में भी होते हैं, but we need to set aside our differences and we have to move ahead, because हम every time we feel अच्छा इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता है, we go back to square one, we take a step back. एंड इट्स ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ये मैं कुछ साल पहले की जब बात कर रही हूँ तो हम उस वक्त ऐसे स्टेज पे थे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज को तो छोड़े, जो यूरोपियन और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इट वाज द टाइम व्हेन वी कुड एक्चुअली ऑलमोस्ट रीच टू देयर लेवल. और ये हो रहा था, जिस तरह के हम यहाँ पे डोमेस्टिकली भी काम देख रहे थे, इंटरनेशनली भी हम इंटरेस्ट देख रहे थे. So it's disappointing, and the only solution is, and it's not difficult. Like I said, we have a lot of potential. और ये एक I think शायद वजाद साहब ने कही थी, and I agree with him कि human resource हमारे पास, this our strength always has been our youth, our human resource. But अब मसला brain drain का हो रहा है ना. Not only are people moving physically out of Pakistan, but यहाँ पे भी जो लोग हैं, जितने कुछ लास्ट कपल ऑफ इयर्स जिस तरह हमारे गुजरे हैं, तो हमारा माइंडसेट वैसा नहीं रहा है. इवन आप बच्चों को देख लें, ऑनलाइन, a lot of parents have complained कि online schooling, yes, it was the need of the hour, but it also had an adverse impact on the ability of the child to be as great a student as that child was when he was going to a physical school. अब हमारी बात कर लें, ऑफिस गोअर्स की बात कर लें, प्रोफेशनल्स की बात कर लें, हमारी एक रूटीन चल रही थी, देयर वाज अ सिस्टम, यू नो, वी वर वर्किंग, देयर वाज वर्क लाइफ बैलेंस भी था, सब था. ये जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, ठीक है, पैंडेमिक मजबूरी थी, पर उसके बाद से हालात साजगार हुए ही नहीं कि वी कुड गेट बैक इनटू द फ्रेम ऑफ माइंड टू फोकस ऑन व्हाट वी रियली नीड. एंड ये मैं हमेशा कहती हूँ, आई से दिस टू एवरीबडी, जितने और ममालिक हैं जिनको हम देखते हैं या अपना बेंचमार्क रखते हैं, they have reached, because they've been around for so long, for centuries, तो उनका naturally एक स्लो डाउन आना था और हमारा नेचुरली एक बूम आना था. सो और उनको अब जो सिस्टमैटिक इश्यूज हो रहे हैं, द इश्यूज दैट दे फील आर एक्चुअली वेरी डीप रूटेड. हमारे जो इश्यूज हैं वो बहुत सुपरफिशियल हैं, which is why I'm, despite everything, I'm always very, very hopeful that these issues can be resolved if there is a will, if we all focus on it and put aside our personal differences. Because, and now I think everybody feels कि अब क्या, what next? And एक melancholy है, we know कि the next couple of months, this year, इस तरह हालात रहने हैं, but हालात बेहतर होंगे. So again, ये मैं last few months में इतनी, I mean, overnight I hear that people have left. वो आएंगे, वो लोग वापस भी आएंगे, अगर जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे. बट उस वक्त तक हम सब जो यहाँ हैं, हमें कोशिश करनी है कि जितना हम अपने तौर पे फोकस कर सकें. और दूसरा देखें, एक, आई मीन, एजुकेशन सेक्टर इज अ नोबल सेक्टर. जिस तरह मेरा प्रोफेशन है, लॉ प्रोफेशन, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग, इट्स नॉट अ बिजनेस, राइट? तो थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव भी चेंज ना. आई फील कि पैंडेमिक में, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सेल्फलेस, ऑल ऑफ अस हैव नाउ, अब बस एक फोकस ये आ गया कि हम अपने आप को किस तरह से, हाउ डू वी डू गुड फॉर आवरसेल्व्स. वी हैव स्टॉप थिंकिंग अबाउट द जनरल गुड, कि हम सोसाइटी में किस तरह, मतलब इस इतने हालात के बाद, एंड वाज अ वेरी फेटल पैंडेमिक, इस हालात के बाद अगर हमारी सोच में तब्दीली नहीं आ रही है तो फिर कब आएगी? सो वी नीड टू, आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्ट्रगल्ड throughout their lives, and they now think that now finally it's the time कि, you know, we should take everything off our bucket list, because जिंदगी का क्या भरोसा, हालात इतने चेंज हो गए हैं, let's enjoy ourselves. वो भी आप करें, but साथ साथ leave a legacy. All of us individually can leave a legacy, and not because कि हमें कोई अपनी ग्लोरी चाहिए या अपना नाम चाहिए, but एक मकसद होना चाहिए ना. There should be a higher purpose, and that higher purpose is to do something good, to leave good behind. So देखिए, लॉ, और आज ही मैं पढ़ी थी किसी क्लाइंट के लिए, लॉज थे और उन्होंने पूरा रोड मैप, हमारी इतनी पॉलिसीज हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, टीएमटी हमारा जो सेक्टर है, आई कैन नॉट टेल यू हाउ
exciting and dynamic that sector was, जो हमें बाहर से investments आ रही थी, we were मतलब compared to some of the first world countries, हमारा वो sector इतना dynamic था, इतना scope था उसमें, उसके बाद से बस हालात ऐसे हुए हैं कि चीज़ें रुक भी गई और थोड़ा सा we started taking a step back. So इस तरह की बहुत फोकस ही नहीं है. अभी भी अगर आप लॉज या पॉलिसीज उठा के पढ़ें, इतना अच्छा उन्होंने रोड मैप दिया है, यू कैन एक्चुअली पुट योरसेल्फ बैक इन टाइम कि अच्छा उस वक्त ऐसे सोच रहा था, आज हम यहाँ होते, चले अभी नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि हम हो नहीं सकते हैं. सो आई कैन ओनली स्ट्रेस दैट Sorry, sir, I can't hear you. I think Sahar ka connection is. Yes. Only the Okay, Sahar so- connection is dropped. Yeah. We've lost our. अच्छा, चले. I'll actually try now wind up and conclude. We're at the end of the session, but thank you to Sahar for touching upon very very valid points. बहुत heartfelt बातें की सहर ने, I think, and मेरा ख्याल है हम सबकी similar आवाज़ें हैं when we sit and talk about things कि हमने किस तरह से आगे चलना है. The bigger picture is important. EdTech की हम बात कर रहे थे, लेकिन I think we've actually discussed a lot of very important aspects as well. हम technology और education के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे आज बात कर सके हैं, which is always very refreshing, and it encourages me at least कि हमें ये अंदाज़ा है कि किन किन एरियाज पे काम करना है. सहर जो बात कर रही थी कि सिटिंग ऑन वन टेबल, हैविंग दैट कलेक्टिव गुड इन माइंड, चाहे वो लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकर्स की तरफ से आ रहा है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट की तरफ से आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के इनपुट से आ रहा है. वेलकम बैक सर, सॉरी आप बीच में ड्रॉप हो गई थी. सो आई वाज जस्ट समिंग अप कि आपके जो भी पॉइंट्स थे, हम आई थिंक हम सब उसी बात है वो कलेक्टिवली एग्री करते हैं कि एक बिगर पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है और फिर अपना अपना रोल उसमें कि हम क्या कर सकते हैं. Education, of course, is the backbone of any country's growth and its development and its way forward. let me just give you a small example, and this is public knowledge, so I can actually disclose it because कुछ हमारी transactions confidential होती हैं. हमारे पास, I don't know आप में से किन्होंने Kumon, Japan is yes. So we advised them. They contacted us a couple of years ago. This was just when the pandemic had started, and they wanted to come to Pakistan. And it was a very exciting, very different. I'm not an educationist, but even for me, it was a very interesting concept. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वी वर्क विद देम, हमने उनको लॉज बताए एंड लॉज भी हमारे बहुत फेवरेबल थे. सो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू कम. लॉज बहुत फेवरेबल थे, जो भी उनके अग्रीमेंट्स थे. और फिर हमारा ये भी होता है ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो बहुत एलिमेंट्स होते हैं. आपको कंपनी सेटअप करनी होती है, आपके रेगुलेटर्स होते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन होता है, स्टेट बैंक होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन होता है, लॉज बहुत हैं. तो हमने उनको सारा बताया और वो कहते हैं ना जब सब व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी तो and ये मैं सिर्फ example, I'm not talking specifically about Kumon, but what I'm saying is that Pakistan has been the next frontier market for so many international clients and so many global organizations. I cannot tell you how, like I said, it was such an exciting time to be in, but it saddens me to say this that उसके बाद से बस हम थोड़ा सा we've lost track a little bit, but and ऐसा नहीं है, we will continue to be a very interesting market for a lot of organizations. We just need to get back. We need to put our house in order. We need to show the world we're back in game. This is why I keep stressing that we've not lost any opportunity. थोड़ा सा embarrassment हो गई है हमें दुनिया के सामने, but we can easily come back. So मैं यही कह रही थी कि एजुकेशन सेक्टर में ये तो कुमॉन एक है, बट इस तरह के बहुत होंगे. एंड इमेजिन कि हमारा एजुकेशनल और लेवल कितना अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो जो एक ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम था, तो दिस वाज वेरी एक्साइटिंग. दिस वाज जस्ट वन. सो
टेक सेक्टर में हमारी इन्वेस्टमेंट्स, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, टेलीकॉम में आई हैव अ लॉट टू से. आई थिंक इतना नहीं है शायद. Absolutely. I think, Sahar, sorry, I'm going to just jump in here because we'd like to conclude now. Absolutely wonderful to hear your views. मेरी आवाज opportunity. जी, I think again Sahar का connection थोड़ा सा फिर freeze हो गया. I think the rest of you can hear me. So we'll just I'm going to come to the ending note. So thank you for all of the brilliant views. बहुत सारी ऐसी बातें थी जो I think के हम अपने तौर पे तो discuss करते हैं, but I think this was a platform जहाँ पे हमने collectively we explored a lot of areas. Transformation तक आने के लिए हमें ओवरऑल अपना माइंडसेट चेंज करना है, लोगों की अवेयरनेस पे काम करना है, to be able to get people to understand के value क्या है, and then that connection, that technology builds up between the local, international, private and public platforms. Mustafa Saab, I'll quote you again because I think third sector जो non-profit sector है उसकी alliances बहुत ज़रूरी हैं for edtech or in any case just regular education to grow in Pakistan. I think there is a lot that can be explored there. And Mara, I think a very valid point के जो ट्रांसफॉर्मेशन सोच की है वो सबसे पहले आनी चाहिए. वजाहत साहब had to leave early as well and I think we've lost Samar and Mehdi साहब as well. Very valid points कि human resource पे काम करना है and so let's keep working towards this mission that we have. There is a lot more potential. There are of course challenges, hindrances हैं, बहुत सारे road blocks हैं, लेकिन resilience इसी चीज़ से आती है कि you keep moving forward. आप जहाँ हैं उससे आगे चलना शुरू करें. So I think that is the last thought that I'll leave everybody with, that we are where we are at the moment, but there is always a way forward. So let's try and work together with academia, with education, with the public-private sector, with the corporate world, with the skills-based training and development sectors as well. And of course, with the guidance of the public and legislative councils as well. So as Sir said, the laws to bahut sari hain, let's make them work for our benefit. So inshallah, we'll see more of you, and I hope we'll get to meet again in another session. Thank you all for your time. It was very lovely to have you on board and have your valuable views today. So, Thank you and Thank you, goodbye. Ms. Simbu, for having me. Thank you. thank you. Thank you. Bye, Hafiz. Bye. Allah Hafiz.